Okay, so Morning, sir. morning, very good morning to all of you. Okay, so let us start some problem which is related to boundary values problem. Okay, so first of all, we had studied some uh, what is the initial value problem. Already we had studied in previous classes. Okay, so today we will discuss about what is a boundary value problem and what is a uh, homogeneous boundary value problem and what is non-homogeneous boundary value problem. Okay, what is periodic boundary value problem and so on. Okay, so and next one we will convert into the normal form. So I think that two parts are left in the section ODE. Okay, so दो क्लास है, दो क्लास एक में हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और एक में हम नॉर्मल फॉर्म सिंगुलर और ऑक्सिलरी सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो दो क्लासेस के बाद आप हम फिर मूव करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में और हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आज ही पोस्ट सम एक्सरसाइजेस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, तो ओके सो आज स्टार्ट करें. ओके, so for if we take a simple second order differential equation, so for a second order differential equation, and the initial conditions are suppose we write y prime plus pxy prime plus something function of x y that's equals to some r. Okay, and this is a function of x. So this is also a function of x. Okay, so this is a second order differential equation. Uh, Okay, so here if some initial condition are given, suppose if this is your initial value problem when the initial condition are given, suppose like this, x, what is the value of y at initial point, suppose this value is this thing, and another condition is because this is a second order linear differential equation, so that's why you get some c1 and c2 be the two arbitrary constants. Okay, because this is of order 2, so that's why you get C1 and C2 are two arbitrary constant for that second order differential equation. Okay, so that's why here you have to obtain what is the C1 and C2 by using initial condition. So here the first condition is this thing and second condition is like this. Okay, so this is your initial value problem. Suppose this is y0, suppose this is okay, suppose this is something y1. Okay, so this is your initial value problem. Okay, so you had already studied this type of problem in previous lectures. Okay, so here, if we redesign this problem with a boundary value problem, okay. So if we write this with boundary value problem, this is with boundary value problem. So you can take any of the following can and will be can be used for boundary condition. Okay, so what is the boundary condition? Boundary conditions are suppose if we take at y0 and suppose some value is suppose this equals to something y0 and suppose at next point another point, suppose this is a u y1 and suppose this value is given or derivative is given. Okay, or suppose this point and derivative given or this derivative and this point is given. So you can find
any one of this condition. So there are basically four probability. So because here the initial point is x naught, and the point is this thing. Okay, and this is second order differential equation. So you have are defined at y at this point, or y at this point, or the derivative at this point, and you have derivative at this point. Okay, so there are so you have four choices, because if we consider this and this and this, second and third this and this, and fourth this and this. Okay, so that's why we uh, explain here the all possibility of this boundary value problem. This is y at this point, and suppose y prime is, suppose something y1. Okay, so this can be used any one. If you use any one of that, this is your boundary value problem. Okay, so uh, how to suppose any second order linear differential equation, and पहले आपने कर चुका है कि यदि आपका इनिशियल कंडीशन गिवन हो, स्टार्टिंग में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि यदि किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन हम चेंज करें, इनिशियल कंडीशन चेंज करें, तो हमारी जो उसके सोल्यूशन है, सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या होती है, चेंज होती जाती है। ओके, तो दिस मीन्स प्रॉपर्टीज का सेंस क्या है, अगर आप इनिशियल कंडीशन चेंज करते हो तो आपको यूनिक सोल्यूशन भी मिलता है, इनफिनिट सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, और नो सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। ओके, सिमिलरली इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में भी अगर आप अपनी बेसिकली this one your this is your initial condition, because it is given at x naught point, and this is for a boundary value. Okay, so this is for your boundary value problem. Okay, so यदि आप एक पॉइंट को फिक्स करें, ओके, क्योंकि आप ये श्योर नहीं है कि विच वन इज बाउंड्री। ओके, सो अगर आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें, ओके, और सेकेंड वन को हम अगर वेरी करें, ओके, सेकेंड बाउंड्री पर हम वेरी करें, तो भी हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, चेंज होंगे ड्यू डिपेंड्स ऑन दैट बाउंड्री। ओके, सो in next page, if we take a simple example and take initial condition as same, and the other condition that, because in boundary value problem there are two we have the given values of y at two different points. So if one value is fixed and second one is varying, so we will realize what is the nature of that second order differential equation. Okay, तो हम ये देखें कि अगर हमारा एक बाउंड्री को अगर हम फिक्स कर लें, सेकंड को हम चेंज करें, तो क्या हमारा सेम जो हमारी प्रॉब्लम है, दैट इज उसका नेचर एक ही है या फिर चेंज हो रहा है। ओके, सो in next page we consider a simple problem. So in next page, okay, so next page we take second order differential equations. Suppose solve the following boundary value problem, and this is y prime plus 4y, that's equals to 0, and boundary condition is, suppose this is minus 2 and this is 5 by 4. Okay, so this is a simple problem. So here the second order differential equation. So what is the general solution? So you know that the general solution is, if we write yx, that is a c1, and this is a cos 2x, because the roots are m square plus 4 equals to 0, so roots are plus minus 2y, so that's why the general solution is c1 cos 2x plus c2 sine 2x. Okay, so now we have to use these two conditions and try to find what is the value of c1 and c2. Okay, so now all that we need Okay, so here we using simply boundary condition.
So what is boundary condition is y0 that equals to minus 2. So what is the boundary condition? Boundary condition is y0 equals to minus 2, and second one is y of pi by 4 that equals to 10. So if we apply this thing, so if we putting here 0, so what is the value of x here? 0, this becomes 0, this is c1. So that's why we get this equals to c1 equals to minus 2. Okay, and here from this if we put pi by 4, so this becomes pi by 2. So cos of that equals to 0, because this is cos pi by 2 equals to 0. This is c2, so this becomes c2, and here pi by 2, this becomes 1, so c2 equals to 10. Okay, so this means the solution is basically, what is the final solution? So the solution is uh, what is yx here. If we put this equals to minus 2 cos of 2x plus 10 sine 2x. Okay, so this is the general solution, and here this is the fixed one, because here no arbitrary constant is there. So okay, so this is your unique solution for this boundary condition. Okay, suppose if we take suppose this is your first boundary condition. Okay, and suppose if we solve this same problem, suppose this is first one, and suppose if we take second, you have to solve this boundary value problem, and that why boundary value problem is same, this thing, and one condition is remain same. And if we uh, change second one, okay, and suppose if we change second one and boundary condition, and suppose this equals to minus 2. Okay, so for that what is the general solution? Okay, so the general solution is, you know that the general solution general solution is same yx, because this is your second order differential equation. Okay, so what is your general solution is c1 cos 2x plus c2 sine 2x. Okay, so now we try to find what is the arbitrary constant C1 and C2 by using this boundary condition. Okay, so what is your boundary condition? So boundary condition is y0 equals to minus 2. Okay, so this becomes, if we put here, so this becomes C1 equals to minus 2. Okay, so okay, in first case you have already find C1 equals to minus 2. Okay, what about y at 2 pi? So if we put y at 2 pi in this equation, and that equals to minus 2. So this equals to minus 2. This implies if you put in here y equals to 2 pi, this is 4 pi equals to 0. 4 pi equals to 0. And here 2 pi, this is 4 pi, that equals to 1. What is the value of C1? So C1 equals to, here C1 equals to, what is your y2 pi? That equals to minus 2 again. Okay, so this means you can only find from these two boundary condition, you can only find one arbitrary constant, that is C1 equals to minus 2. What about C2? So C2 is be the any real one. Okay, so that's why your the solution, the final solution is the solution of this problem is yx that equals to minus 2 cos of 2x. But here we are not able to find what is the value of C2 by using this boundary condition. So here C2 with arbitrary constant, and that is any real number. Okay, this C2 of sine 2x. Okay, so this is your general solution for this boundary value problem. Okay, but if we change this arbitrary constant C2, there are the different solution of this given boundary value problem. Okay, so for infinite value of C2, this solution is infinite. Okay, so this means in this case you get we get infinite infinitely many solutions. Okay, many solutions. Okay, so of this boundary value problem, because the C2 be your any value. Okay, and if we take suppose same boundary value problem, and if we write the initial condition are, first one is same, and second boundary condition are, if we change little bit, so this equals to same minus 2. And suppose if we take
this 2 pi, if this 2 pi is, suppose this equals to not equals to minus 2, because here c1 equals to minus 2. Suppose if we change this one, because in this case c1 is also the same, here we change this is minus 2 to suppose 2, 3, 4, 5, other than this minus 2. So suppose we take suppose so say 5, okay, or you can take suppose this is 3, or suppose this is 10, okay, or anyone, okay. So for that case, what is the general solution? So the general solution is, okay, same, yx is c1 cos 2x plus c2 sine 2x, okay. And if we're using this initial condition, so what is the value of y0? Y0 is minus 2. This implies and y of 2 pi, this equals to 5. And this implies, okay. So when we putting 0, so you get c1 equals to minus 2. When we put in 2 pi, so this again c1, that equals to 5. So this equals to 5. So here c1 equals to minus 2 and c1 equals to 5. Okay. So this means in this case we have a set of boundary condition, each of which requires a different value of c1 in order to be satisfied. Okay. So this is not possible, and so in this case they have no solutions. Okay, so in that case, they have no solution because this is not possible for that c1 is minus 2 and c1 is 5. Okay, so here आपने ये देखा कि this boundary value problem, if we change the boundary condition, the same ordinary second order differential equation has unique solution, has infinite solution, and no solution. Okay, so that's why our this boundary conditions are important. Okay, so here what is a linear homogeneous boundary value problem and what is a linear non-homogeneous boundary value problem. So first of all, what is your boundary value problem? Okay, so in next page, if you consider next page, so if we consider second order boundary value, second order linear equation, and that equation is already defined by this ax y double prime and bx y prime, and that equals to 0. Okay, so this is your homogeneous, and if this is not equal to 0, this is also a function of, suppose this is equal to something dx. Okay, so this is your non-homogeneous second order differential equation. Okay, and here what is a here? So a is lies between any interval a to b. So say this is your equation number 1. Okay, so here what is the coefficients of that second order and first order derivative? So here this ABC are basically continuous in that domain. So this is continuous real valued functions, which is defined on closed interval AB. And what is L? So L is basically differential operator which is defined on the set of twice continuously differentiable function on the given interval AB. Okay, so for any two or any scalars, okay, so for any scalars, suppose a1, a2, a3, a4, and this y1, y2, y3, and y4, this can be expressed as a linear
combination of this. So E1 of this thing plus A2 of Y2, A3, Y3, A4, Y4. This is basically this is called linear form. You know that this is a linear form in the variable in the variables, and that variables are y1, y2, y3, and y4. So you know that this is your linear form, okay? And two linear forms, and also you know that two linear form, तो ये तो आप जानते ही हो. Suppose v1 and v2, these are linearly dependent. It's said to be linearly dependent if there exists any scalar. Suppose we take any scalar, suppose k, such that this v1 can be expressed in the form of this thing. Okay, so for all variable, that is y1, y2, y3, y4. Okay, and this two linear form, that is v1 and v2, are called linearly independent, are called linearly independent if this v1 and v2 are not linearly dependent, not linearly dependent. Okay, so basically our main concern about this, what is your linear form? Okay, because this is your linear boundary value problem. So our this given differential equation is linear, and also the boundary conditions must be real. Okay, so here there are basically two types of problem, which is first one is linear homogeneous boundary value problem, and second one is linear non-homogeneous boundary value problem. Okay, so we defined both type of problem here. So in next page थोड़ा theoretical है, लेकिन आप जानते रहें कि okay, so what is a linear homogeneous boundary value problem? Okay, so if we consider an equation of type first, जो भी हमने पिछले पेज पे लिखा, and let you v1 and v2, suppose this two v2 linearly independent linear forms. If these two are linearly independent linear forms, ya, yb, y prime a, and y prime b. Okay, because these a and b are the boundaries. Okay, so a linear homogeneous problem of finding a function y which is defined on closed interval ab and which satisfies Hello, sir. this condition, and that condition is uh-huh,
सर ये आपने टू लीनियरली बोले इंडिपेंडेंट के बाद क्या लिखा हुआ है ऊपर सेकंड two थर्ड independent लाइन में forms, linear forms. लीनियर ओके सर Consider an equation. Consider an equation of type 1 let v1 and v2 be two linearly independent linear forms in the variables y a, yb, y dash a, y dash b, and a linear homogeneous boundary value problem is the problem of finding a function. Basically क्या आपकी है तो आप एक function find करते हैं जो satisfy आपकी जो condition है, that is if you take in the form of y a, y b, y prime a, y prime b, that equals to 0, and here I is simply 1 and 2. Okay, so this is your equation 2. Okay, so this is which satisfies this condition and of course this boundary value condition, these both condition simultaneously. Okay, so this is a simultaneously. Okay, and the condition 2 here, the condition 2 is called, this is called homogeneous linear homogeneous boundary condition. Okay, so this second one is known as linear homogeneous boundary condition, which is stated at x equals to a and x equals to b. Okay, so this is your homogeneous boundary value problem. Similarly, you can define a non-homogeneous boundary value problem. So similarly, you can define linear non-homogeneous बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. ओके, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एज्यूम कर लेंगे कि लेट एनी फंक्शन एंटर फंक्शन डी which is from this interval, this is basically a real valued continuous function, this be given because this, here a b c are continuous functions, so here a b c d be the continuous function. Okay, so this be a continuous function, continuous function in given domain, and your problem is of type this type ly that equals to dx. Okay, so that's why this is your non-homogeneous, and here what is x belongs to interval, this is ab, and with this condition, and condition is second condition is, what is your condition is second condition, this ly that equals to dx. Okay, and the condition is, second condition is this vi is ya, yb, or y prime a, y prime b. Okay, so this equals to 0 when I equals to 1 2, where I equals to 1 and 2. Same thing, same thing. So if this condition satisfies this thing, so this type of linear differential equation is known as linear, this is your लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस कंडीशन को आप जो है इसे आप कहेंगे लीनियर नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन. ओके, तो सिमिलरली सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, सेम सेम फॉर्म. ओके, तो आप इसे खुद से, हम तो इसे रफली हमने लिख दिया है, पर आप इसे लिख सकते हो कि इस टाइप की इक्वेशन हो जहाँ पे हमारे लीनियर होमोजीनियस की जगह आप लिख सकते हैं लीनियर नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन y which is defined by this thing. Okay, so here this is equals to 0 here, that is dx, and d be the any real valued continuous function from that domain to R. Okay, so this type of linear differential equation is known as linear non-homogeneous boundary value problem. Okay, सपोज एक हम एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो नेक्स्ट पेज पे हम दोनों के एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट पेज
uh, an example of a linear homogeneous boundary value problem. Linear homogeneous boundary value problem is Ly. That is, suppose y prime e to power x, y prime plus something 2y equals to 0 when x lies between 0 and 1. Okay, suppose this is your second order linear differential equation. Boundary condition with boundary conditions, suppose y0 this thing and suppose y prime is this thing. Okay, so you see this is your boundary condition. So in this case, basically, if we relate this with linear form, so this in this case, you can what is your v1? So v1 is function of y0, y prime 0, y1 because these are two boundaries. So y prime 1. Okay. So these are the linear form v1 first one, and second what is v2? V2 is also function of this y1 and y prime 1. Okay, so what is the first one? First one is here the first condition is y0 minus y1 that equals to 0. So this is your first linear form. Okay, and here what is the second one? Second one is y prime 0 minus y prime 1. That is the second linear form. Okay, so here you get what is the v1 and v2. So this is example of a linear homogeneous boundary value problem. And if we ये take लास्ट का solution क्या है? So ये लास्ट सॉल्यूशन में आया. this is this is your boundary condition is given y0 equals to y1 first boundary condition. Okay, and second is this thing. तो इस बाउंड्री कंडीशन को आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो बिकॉज ये बाउंड्री कंडीशन जो होगी, बाउंड्री कंडीशन जो होगी इन्हीं के फंक्शंस के फॉर्म में होगी उसमें आपका, और कैसा फॉर्म होगा वो लीनियर फॉर्म होगा. ठीक है, जो आपके बाउंड्री जो ये कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है वो आपके इन्हीं के फंक्शंस होंगे, इन्हीं के फंक्शंस होंगे, और वो कैसे होंगे मेरे लीनियर फॉर्म होंगे. लीनियर फॉर्म में समथिंग स्केलर ऑफ समथिंग प्लस 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 इक्वल्स टू 0. ओके, तो किसी के फंक्शन वो हो सकते हैं, आइदर y0 के हो, y0 y प्राइम हो सकता है, y0 y1 हो सकता है. ओके, y0 आपका क्या कहते हैं किस में हो सकता है, y0 के साथ है तो आपका y1 होगा, या y0 के साथ y प्राइम होगा. y डैश के साथ है तो 0 के साथ y1 भी हो सकता है, डैश के साथ y1 प्राइम भी हो सकते हैं. तो ये डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को अगर हमारी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर हम इस तरह से लिखें, दिस इज y0 माइनस y1, दिस कंडीशन हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं y0 माइनस y1 इक्वल्स टू 0. दिस इज बेसिकली अ लीनियर फॉर्म व्हिच इज फंक्शन ऑफ दैट. ओके, तो इसमें लीनियर फॉर्म का सेंस क्या है? लीनियर फॉर्म में आप क्या करते हो, बेसिकली लीनियर फॉर्म में आपको मालूम y1 y0 ये चीज हम बता रहे थे कि यहाँ पे आपके. हेलो हाँ हाँ, सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी सर. अच्छा 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 अच्छा, कि वो फोन फोन आ रहा है ना तो इसलिए ब्रेक हो जा रही. ओके, तो इसमें हम हाँ ये कह रहे हैं कि ये जो है आपका जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो दिया है दैट इज y0 माइनस y1. ओके, तो इस y0 इक्वल्स टू y1 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस लीनियर फॉर्म. लीनियर फॉर्म आपको मालूम है कि व्हाट इज लीनियर फॉर्म. लीनियर फॉर्म ऑफ दिस वेरिएबल, this means this can be written as a scalar multiple linear combination of these four variable. Okay, so this means a1 something, a2, a3 and a4. तो here अगर आप ये देखें तो यहाँ आपका a2 और this
A3 इज जीरो, A3 A2 एंड A4 इज जीरो है, और यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 है और A3 की वैल्यू जो है वो -1 है। ओके, तो ये आपके लीनियर फॉर्म में है। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो ये भी आपके क्या है, उस लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने बताया कि यहाँ पे आप ये जो लीनियर जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस हैं वो लीनियर फॉर्म्स में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो लीनियर होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कब होगी, जबकि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारी क्या हो, लीनियर हो, और साथ ही साथ हमारा जो बाउंड्री कंडीशन है, वो भी हमारी किस फॉर्म में हो, लीनियर फॉर्म में हो। जब दोनों ही लीनियर होंगी तभी हम कहेंगे कि हमारी जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमें दोनों चीज देखनी है। सपोज अगर आपका एक हम एल वाई हम इस फॉर्म में लिख लें, विच इज साइन ऑफ 2 pi x, where same x belongs to 0 and 1. So this is Ly equals to यहाँ 0, this is the linear homogeneous, but in this case this is linear non homogeneous. Okay, और हम सेम बाउंड्री कंडीशन लिखें, सेम बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशंस अगर हम सेम रखें, दिस y0 equals to y1 and y prime 0, this equals to y prime 1. Okay, so this is an example of linear non homogeneous boundary value problem. This linear non homogeneous boundary value problem. ठीक है, ये आपकी ऐसी होगी। नेक्स्ट है कि हम उस पर भी आएंगे कि कौन सी हमारी प्रॉब्लम जो होगी वो नॉन लीनियर होगी। नॉन लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम किसे कहेंगे। ओके, तो उससे पहले है हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, सेकंड वन इज रेगुलर लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास है नॉन लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो सारे डेफिनेशन है, हम आज यहाँ डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और वहां डिफाइन करते हैं व्हाट इज पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। Okay, so the boundary condition if ya and yb are same and the derivative at that point is also same, then this type of condition are usually known as, this is usually known as periodic boundary condition. Okay, and second, what is regular linear boundary value problem. Okay, so a linear boundary value problem which is homogeneous or non-homogeneous and non-homogeneous is called regular linear boundary value problem if the inch points A and B are finite, and in addition to this, ये दोनों तो फाइनाइट होने ही चाहिए, जहां पे हमारे डिफाइंड है ये दोनों हमारे फाइनाइट हो, और साथ ही साथ जो फंक्शनल वैल्यू है कोएफिशिएंट फर्स्ट वन,
So and in addition to that, your AX, which is the coefficient of X, which defined on that domain. So this is for all X, for all X belongs to AB. Okay, so here this boundary value problem is known as regular. And second, what is singular? What is singular linear boundary value problem? So any linear boundary value problem which is not regular, which is not regular, is called a singular linear boundary value problem. Okay, so these are the types of boundary value problem. Okay, so we tried to define what is your singular linear boundary value problem. So in next page, basically there is a basically lemma. Okay, so अब यहाँ प्रूफ हम नहीं करने जा रहे हैं. ओके, प्रूफ नहीं, हम सिर्फ आपको एक सिंपल इसकी डेफिनेशन दे दें, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है, हर चीज की प्रूफ पॉसिबल भी नहीं. सो अ लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम व्हिच इज basically which is defined by equation 1, which is defined by equation 1 and equation 2. Okay, equation 1 and 2 means equation 1 क्या था आपका, वो L Y that equals to 0. Okay, and what is equation 2? Equation 2 for homogeneous के लिए है, और या तो आप चाहे तो equation 1 and non homogeneous वाली ले लें, कोई भी ले लें. ओके, तो इसके लिए भी कोई भी लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, चाहे होमोजीनियस हो, दिस मींस 1 and 2, नॉन होमोजीनियस मींस 1 के साथ 3. Okay, so this any linear boundary value problem is singular. This is basically singular if and only if one of the following condition hold. Now the following holds. So first one is either this A is infinity हो जाए, या फिर मीन्स लेफ्ट साइड में है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाए, या B आपका राइट साइड में है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी हो जाए. सेकेंड वन आइदर दोनों ही आपके इन्फिनिटी हो जाए. सो वी कैन राइट बोथ A is minus infinity and B is plus infinity. Or C, the coefficient of double derivative that equals to 0 हो जाए for at least one point when X belongs to AB. Okay, तो अगर ऐसा है तो आप इन सभी केसों में आप आपके जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज योर सिंगुलर. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड इज बोथ मतलब दोनों के दोनों ही हमारे इन्फिनिटी हो जाए, बिकॉज ये आपकी कंडीशंस दी हुई पॉइंट ए है और ये बी है. ओके, अगर ए हमारा माइनस इन्फिनिटी हो जाए या बी हमारा प्लस इन्फिनिटी हो जाए, आइदर दिस और दिस. ओके, दिस मींस इस टाइप का इंटीग्रल हो माइनस इन्फिनिटी टू. ओके, इस टाइप का इंटीग्रल हो, या फिर ऐसा हो कि -4 टू सपोज प्लस इन्फिनिटी, या 5 टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरह के इंटरवल हो, या फिर आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल हो जाए. तो ये चीज कर रहा है, आइदर एक साइड इन्फिनिटी हो या दूसरे साइड इन्फिनिटी हो, या फिर दोनों साइड इन्फिनिटी हो, या फिर आपका जो फंक्शनल वैल्यू है उसी इंटरवल में, इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू ही क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो इस तरह का कुछ भी है तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कहेंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को आप कहेंगे सिंगुलर लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. ओके, और वो चाहे आपका लीनियर
होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, कुछ भी हो, अगर बाउंड्री कंडीशन पे ये चीज सेटिस्फाई करती हो तो आप उसे सिंगुलर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज नॉन लीनियर। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम which is not a linear boundary value problem. It's called a non-linear boundary value problem. So this means कि नॉन लीनियर ना हो तो कैसा नॉन लीनियर ना हो, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की वही नॉन लीनियर हो। द डिफरेंशियल इक्वेशन may be non-linear। ओके, हेलो सर। और हाँ हाँ हेलो सर, ये एटलीस्ट हाँ, वन के बाद क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट, सर ओके सर, ओके सर। पॉइंट एक्स ओके। तो हम थोड़ा नोट्स है ना थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं हम थोड़ा, क्योंकि ये सारी चीजें आप नोट कर लें। अभी हम इसके प्रॉब्लम पे आना चाहते हैं क्विकली, तो इसलिए सारी चीज को हमने डिफाइन कर लिया और फिर उससे प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। तो नॉन लीनियर कब होंगे? नॉन लीनियर कब होंगे कि जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही, द डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी नॉन लीनियर, फर्स्ट वन। सेकंड, the given differential equation आपका लीनियर हो, so this may be linear, okay, but boundary condition जो है, but the boundary conditions may not be linear, okay, may not be linear homogeneous, okay। तो आप नॉन लीनियर कब कहेंगे? जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज नॉन लीनियर हो गया और बाउंड्री वैल्यू आपकी जो कंडीशन है वो लीनियर हो, लेकिन अगर इक्वेशन अगर नॉन लीनियर है तो ऊपर भी नॉन लीनियर हो गई। अगर ये लीनियर है और ये अगर नॉन लीनियर हो गया तो ऊपर भी आप नॉन लीनियर कर लेंगे। दोनों नॉन लीनियर है तो आपका नॉन लीनियर ही होगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर ऐसा है तो आप इसे नॉन लीनियर में ले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास अभी 5-7 मिनट है, तो हम नेक्स्ट पेज पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज ओके, suppose our boundary value problem is y double prime plus, suppose mod y ले लें, that equals to 0 when x is lies between 0 and pi, okay, with बाउंड्री कंडीशन। अगर हमने बाउंड्री कंडीशंस हमने रखी y0 दैट इक्वल्स टू y पाई दैट इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर आप देखें तो दिस इज अ लीनियर और नॉन लीनियर। हम इसे किस में रखें? दिस इज अ लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और नॉन लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या होगी आप बताएं? गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, ये आपकी लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो लीनियर और नॉन लीनियर हम कैसे करेंगे? हम पहले देखेंगे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नहीं। अगर ये लीनियर है तो हम इसकी बाउंड्री कंडीशन को देखेंगे कि ये हमारी लीनियर है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे आप देखें तो आपका जो बाउंड्री कंडीशन है दैट इज योर लीनियर फॉर्म में है, ओके। दिस इज योर लीनियर फॉर्म बेसिकली है क्या? लीनियर फॉर्म आपकी है दिस पॉइंट्स क्या है? ए एंड बी। दिस मींस y as defined at 0, y defined at pi, y prime defined at 0, y prime defined as pi, ओके। इसकी कोई भी लीनियर फॉर्म में आपकी होगी। दिस मींस एनी स्केलर a1 y0 plus a2 y pi plus a3 दिस इक्वल्स टू 0, ओके। तो बेसिकली ये आपकी लीनियर फॉर्म होगी। सो y प्राइम 0 plus a4 y prime, that is, this means कि something y0 और
पाई के बीच में कोई भी स्केलर के साथ अगर कुछ भी रिलेशन है दैट इक्वल्स टू दिस थिंग, ओके, तो दिस मींस योर लीनियर फॉर्म। ओके, तो ये होमोजेनियस लीनियर फॉर्म में है, तो बाउंड्री कंडीशन तो हमारी क्या है, लीनियर है, दिस इज इन लीनियर होमोजेनियस फॉर्म। ओके, सो दिस इज लीनियर होमोजेनियस, ठीक है, बट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट linear because due to this term mod 5। ओके, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका लीनियर नहीं है, जब कंडीशन आपकी क्या है, लीनियर है, सो दिस इंप्लाइज दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज नॉट लीनियर boundary value problem। Okay, so this is not linear boundary value problem। Similarly, if we take another example, and suppose if we write the boundary value problem, which is defined like okay, so y double prime minus 4y that equals to e to the power x, where x is belongs between 0 and 1, with boundary condition, with boundary condition, and condition is y0 y1 that equals to y1 prime 0 and y1 prime 1 that equals to 0। Okay, so this boundary value problem is linear or non-linear boundary value problem। तो यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो this is your this differential equation is linear, so this is linear differential equation। Okay, and here this is linear form or not, so this is your linear form। Okay, and this is this term, this product of these two, so this is not homogeneous, uh, due to this is not homogeneous linear form। Okay, not linear homogeneous, not linear form। Okay, so that's why this given differential equation is not linear बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, चाहे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ना हो या फिर आपका ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो लीनियर नहीं है। लीनियर का सेंस क्या है, सभी अलग अलग, जैसे प्रोडक्ट में आ गए, प्रोडक्ट में आ गए तो लीनियर फॉर्म नहीं होगी, आपको मालूम है, दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कंडीशंस। ओके, तो लीनियर फॉर्म में हमारे क्या होना चाहिए, सभी सभी प्लस में, ऐसे प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्म से ये टैली नहीं कर रहा है, तो दिस मींस यू लीनियर फॉर्म में बाउंड्री कंडीशंस नहीं है, ये ओके है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट दिस वन इज नॉट इन लीनियर फॉर्म। तो दोनों आपकी कंडीशन जो है, कोई एक भी अगर आपकी लीनियर फॉर्म में नहीं है तो फिर आप उसे कहोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नॉट इन लीनियर फॉर्म। ओके, तो हम आपको कुछ एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे देते हैं, उसे आप खुद से करने की कोशिश करें और बताएं कि वो होमोजेनियस है या नहीं। इन नेक्स्ट पेज ओके, so you have to state with reason whether the following boundary value problem are linear, this linear homogeneous। Okay, or linear non-homogeneous। Or non-linear। Okay, so your problem is first one, if y double prime plus sin y equals to 0, boundary condition is this thing। Second, if y double prime plus y equals to 0 and your boundary condition is like this। Third, y double prime plus y
then is y0. Fourth one, this equals to cos 2x, and condition are y square 0 is 0, y square pi equals to y prime 0. Okay, so you have to decide which one is linear homogeneous, which is linear non-homogeneous. Okay, and second problem is the following boundary value problems are regular. So which one is regular? Okay, so this is 2x y prime plus y equals to 0, and conditions are this equals to 1 and y1 equals to 1. Second, okay, 2y prime minus 3y plus 4y equals to 0, and the conditions are minus infinity to 0 and y0 is 1. And third is okay, so y double prime minus 9y is 0, and conditions are y0 equals to 1, y infinity that is 0. ओके, तो आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन से हमारे रेगुलर हैं, है ना, रेगुलर कौन से होंगे इसमें। तो रेगुलर के लिए डेफिनेशन आपको मालूम है कि इसमें हमारी देखिए ये कंडीशन माइनस इन्फिनिटी दे रखा है एक इंटरवल, तो ये हमारा रेगुलर होगा नहीं होगा। ये हमारा देखिए इन्फिनिटी दिया है, तो ये हमारा रेगुलर है, ठीक है। कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो जाए, या फिर इस इंटरवल में, इंटरवल क्या है आपका -1 to 1, यहाँ पे इंटरवल आप देखें, यहाँ इंटरवल इसमें क्या है आपका, इंटरवल है आपका x लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, तो इसमें a की वैल्यू क्या है, इसमें a इक्वल्स टू क्या है, इसमें ax की वैल्यू है आपकी 2x। ओके, तो इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर ax मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एट x इक्वल्स टू 0 और x जो 0 है ये बिलोंग कर रहा है मेरा -1 और 1 में, और यहाँ पे मेरा क्या होगा, ax क्या होगा, दैट ax इज 0 एट x ऑल्सो नॉन रेगुलर। तो कोई भी इसमें रेगुलर नहीं है, आप देख सकते हैं रेगुलर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे a इज माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है b इज प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है मेरा ax इक्वल्स टू 0 इन दिस इंटरवल। ओके, तो कोई भी रेगुलर नहीं। उसी तरह से आप इसमें भी चेक कर लें कौन से आपके लीनियर होमोजीनियस है, कौन से क्या है, ठीक है। तो इसको आप करें और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कल जो है, कल 26 जनवरी है, तो कल क्लास करेंगे आप या क्या है? कल आपकी क्या प्लानिंग है, जैसा बताएं सर, जैसी आपकी इच्छा सर। और नहीं, आप सभी फ्री हैं या क्या है? क्योंकि जैसा बोलेंगे तो हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करके हम लोग बताते हैं सर। सर आपको हम लोग ग्रुप में बता देंगे। ग्रुप में बिल्कुल जैसा होगा बता दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर नहीं है।